Today we are discussing about love gives and greed takes. So the nature of greed is to take, whereas the nature of love is to give. तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टोरी को, ये स्टोरी है एक राजा के बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग, राइट। He was a very wealthy king, right? Not an ordinary king, rather an emperor. So in his kingdom, whoever used to come, he used to satisfy him with so many charities and all those things. So what happened once upon a time, right? Uh, a beggar, practically a beggar came and he challenged that particular king, that emperor. Hey, you, right? What do you think? That you are so wealthiest person, that you are the so wealthiest king, you are the emperor, you have lots of treasure in your wealth, in your treasury, right? If you can satisfy me, then I can think that yes, you are the most wealthiest emperor. अभी आपको मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और अगर आप मुझे सेटिस्फाइड कर देंगे तो मैं जानूंगा कि हाँ, आप वास्तव में सबसे बड़े राजा हैं। तो बोला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं किसी को भी सेटिस्फाई कर सकता हूं, तो तुम क्या हो? बोला, बोलो मांगो, क्या मांगते हो, व्हाट डू यू वांट? बोला, कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा डिजायर है। बोला, क्या? बोला, मेरे पास में एक बेगिंग बाउल है, आई हैव अ बेगिंग बाउल, एंड आपको क्या करना है ना, इस बेगिंग बाउल को पूरा भर देना है। पूरा भर देना है? किससे भर देना है? बोला, हमको जो चाहिए आपको वो देना पड़ेगा, और उससे आपको मेरे इस बेगिंग बाउल को फिलअप करना है। राजा बोला, अरे just to fulfill your begging vow, what great in this, right? So immediately ordered his ministers, listen, right? Immediately fulfill his desire, right? Fulfill his begging bowl with emerald, rubies, jewels, and all those things, right? So upon after getting the instructions of the king, that emperor, right, everyone assembled, and immediately they filled their begging bowl within a fraction of a second. Then immediately what happened, the next moment, immediately everything got disappeared from that begging bowl. उससे सब गायब हो गया। बोला, अरे ये क्या जादू है, अभी डाला अभी बेगिंग बाउल से निकल गया। इज इट लाइक, is there any hole in the bottom, or we are trying to fill some liquid? Just example for like that, we are pouring milk in that vessel and we are trying to just keep that milk in that vessel, but what to do if there is a hole at the bottom, right? So if nothing will be there in the hole, nothing will remain there in that bowl. So they were thinking, and might be something, ठीक है, क्या बड़ा बात है, फिर डालो। फिर से डाला, फिर से डाला, फिर से भरा, अगेन डिसअपियर। बोला, अरे ये कोई जादूगर है क्या? इज ए मैजिशियन, राइट? इज इट डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और व्हाट, राइट? नो आइडिया। देन किंग टोल्ड, हे, why are not you able to fulfill his desire, right? Immediately fulfill his begging vow. यस सर, यस सर, यस माय मैजेस्टी, वी आर डूइंग, राइट। फिर से उसके बाउल में डाला बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती जो डालना था। अगेन नेक्स्ट मोमेंट में फिर से सब डिसअपियर हो गया। अभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या चल रहा है। तो राजा ही बिकम टेंस्ड, थोड़ा सा उसको टेंशन हो गया राजा। तो राजा बोलता है कि मिनिस्टर, नाउ यू गो एंड यू गिव द चैरिटी फ्रॉम योर ओन हैंड, राइट? तो मिनिस्टर आया, उसने सारे सैनिक को हटाया, और मिनिस्टर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेकिंग बाउल में डालूंगा। तो मिनिस्टर अपने हाथ से उसके बेकिंग बाउल में डालने लगा चीज को। तभी क्या हुआ मालूम है? अगले ही क्षण जैसे मिनिस्टर ने उसके बेकिंग बाउल में डाला, अगले ही क्षण सब फिर से डिसअपियर हो गया। अभी मिनिस्टर बोला, ऐसा ऐसा कर रहा, राइट? ही इज रबिंग हिज आईज एंड ही इज नॉट एबल टू बिलीव व्हाट्स हैपनिंग, राइट? Every moment when I am trying to fill his baking bowl with these emerald, rubies, and jewels, right? Next moment it is disappeared. Now the king became really tensed, right? And he got up from his royal throne, right? उठा और बोला कि go away from this place, right? You all are good for nothing. I will fulfill his desire. राजा आता है, अपने हाथ से सोना चांदी जो भी इसको डालना था सब उठाया और ऐसे उसके बाउल में रख दिया। भर गया होगा इस बार, फिर से गायब, अगेन डिसअपियर। माय गॉड, व्हिच काइंड ऑफ मैजिक इज हैपनिंग, राइट? हाँ, मैजिक विदाउट एनी टिकट, राइट? हाँ, मैजिक हो रहा है। एंड किंग प्रैक्टिकली his whole treasury, his whole treasury
become empty, and there was not a single penny left in his kingdom in order to satisfy his begging bowl. The moment he was trying to fulfill his desire, the next moment everything become vanished. अच्छा, by the way, ये जो राजा, he kneel down, right? He kneel down in front of that beggar, and with his folded hand, that emperor asked, "Oh, great person, right? Who you are, right? Please reveal your identity. Are you really God who is here to take my examination, or what?" अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो भी डाल रहा हूँ वो सब निकल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. प्रैक्टिकली नाउ आई एम अ बेगर, राइट? कोई मुझे बता सकता है कि वो बेगिंग बाउल में क्या था कि राजा जो भी डालता था वो गायब हो जाता था? बेगिंग बाउल किसका बना हुआ था? क्या जादू था उसमें? प्रभु जी, can बोलिए I अभी तक. try? I यस. think the baking ball was made out of like a stone. No, I mean like a mud. मड. तो मड में क्या, मड मड में कुछ चीज होल्ड नहीं होता क्या? मड के पॉट में अगर कुछ डालेंगे तो क्या डिसअपियर हो जाएगा अद्विता? No, like it is made of love. अच्छा ठीक है, तनिषा माता जी बताएंगे, बताइए. हाँ प्रभु जी, मैं भी यही बोलने वाली थी. इट इज मेड आउट ऑफ लव. इट ओनली लव कैन फिल दैट बोल. ओके, सिर्फ लव, लव ही वहां पे उसको भर सकता था, सेटिस्फाई कर सकता. एनीवन एल्स? Sani wants to say something, but you are muted. No, no, probably. I am just repeating within my own self, right? Okay. कोई बता सकते हैं? आद्या, किससे बना होगा? हाँ नहीं प्रभु जी, किससे बना होगा? किसी तो बना होगा, राइट? समझ में नहीं आ रहा किससे बना होगा. That baking bowl was made out of human desire. Oh, human desire. My God. अभी समझ में आया. जितना डालो उतना कम. अभी डाला, खत्म. फिर डाला, खत्म. फिर डाला, खत्म. So that baking bowl was made of human desire. You want to check this? You want to take a live demonstration? Then what you can do? You can put a 50 kg rice bag in between the road. Make sure that no one is seeing you, right? And you just keep a close observation. Hide yourself behind the bushes or at some places, or you can install a CCTV camera, right? Then you can find something amazing. What will happen? Some uninvited guest, birds, they will come, right? And they will take only according to their need, right? वो अपने गले में डालेगी, इधर पे अपने बीक में, राइट? और वो डाल करके लेके चली जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि एक चिड़िया ने देखा कि माय गॉड, राइट, एक बैग ही है राइस का, वो पूरा का पूरा सब चिड़िया को बुला के, चीची 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 प्लीज कम, चीची 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 प्लीज कम, राइट? देयर इज a bag full of rice, right? And the whole community of the bird, they flew away after taking that bag of rice. No, it will not happen. Neither it will not happen that they will carry some plastic bags and they will put some grains in that plastic bag as a reserve, as a stock for the upcoming days and the upcoming month. No. Neither it will happen that they will keep some grains at this place and they will fly like this. Right? Nothing. But the most amazing thing is that when a human will come, first he will see who is in the left, who is in the right. Is there anyone in the up or the down or in all the four directions? The moment when he will assure, my God, there is no one, right? Immediately he will take that back and he will run away from that place. Correct? हाँ, इंसान के केस में ये होता है. क्यों? क्योंकि लोभ, लोभ एक ऐसा कारण है जिसके कारण में हमारी जो इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो भले ही सीमित है, लेकिन हम असीमित हो जाते हैं इसके कारण. ठीक है, अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए. जैसे
भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, मैं आई एम शेयरिंग द वर्स विथ यू, बाय द वे समवन इज ट्राइंग टू जॉइन दिस, राइट, बट नॉट एबल टू कनेक्ट, हु इज दैट? आई एम नॉट एबल टू सी द नेम, राइट। ठीक है, तो भगवत गीता में बताया जाता है, क्या बताया जाता है, जरा मैं शेयर करूं आपको श्लोक का। हाँ जी प्रभु जी, जल्दी शेयर कर दो श्लोक का। 1621, राइट, 1621 भगवत गीता teaches us upon greed. त्रिविधम नरकेशेदम द्वारम नास्मत् नाशनः आत्मनः कामः क्रोधो तथा लोभः तस्मात् एतम एतत्त्रयम् त्यजेत्। कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिविधम नरकेशेदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतम त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधं नरकेशेदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। आई वांट समवन हु कैन रीड द ट्रांसलेशन। चलिए हीरा माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. भगवान कहते हैं कि नरक जाने के तीन रास्ते हैं। माय गॉड, इस ये तीन दरवाजे जहां भी दिखे बच्चों भाग जाना वहां से, राइट। कौन से वो दरवाजे हैं? पहला बताया जा रहा है कि लस्ट है, राइट। उसके बाद बताया जा रहा है बच्चों की एंगर है। फिर बताया जा रहा है बच्चों कि वो ग्रीड है, ठीक है। मतलब काम है, क्रोध है और लोभ है, ठीक है। लोभ, क्रोध और काम, ये तीन जो है नरक के दरवाजे हैं, ठीक है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जैसे ही इस दरवाजे को देखे वो तुरंत वहां से भाग जाए। क्या आपके घर में कोई ऐसा गेट है? इज एनी गेट इन योर होम लाइक दिस? हाँ, नो प्रभु जी, हमारे घर में तो ऐसा कोई भी गेट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आगे चल के कभी ऐसा गेट दिखे तो उस गेट से एंट्री मत लेना। हाँ, इमिडिएटली उस गेट को उधर ही छोड़ के भाग जाना, ठीक है। जस्ट रन अवे, अदरवाइज वो गेट किधर खुलेगा मालूम है? वेलकम टू द हेल। हा हा हा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट कृष्णा टीचेस अस अबाउट लव इन भगवत गीता। कृष्णा कहते हैं 15 सॉरी 929 में भगवत गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्म्यहम्। भगवान क्या कहते हैं? समूहम सर्वभूतेषु न मे देशो स्थितः न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्म्यहम्। कोई पढ़ेगा श्लोक को? समवन वांट्स टू रीड दिस श्लोक? आपको जी कहना है? हाँ पढ़िए, चलिए मेरे साथ में आ जाइए। Okay. समोहम सर्वभूतेषु समूहं सर्वे भूतेषु न मे देश्यो स्थित न प्रियः न मे देवसोऽस्ति न प्रियः प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्म्यहम्। मयि तेषु काप्यहम्। चाप्म्यहम्, राइट। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि समूहम सर्वभूतेषु न मे देशो स्थिता न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्म्यहम्। तनिषा माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ प्रभु जी। I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. भगवान कहते हैं कि मैं किसी के साथ में एनवी नहीं करता, किसी के साथ में मैं ईर्ष्या नहीं करता और किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता, है ना।
I do not do partiality with anyone. But those who love me, those who render loving devotional services unto me, I love them. Why? Because they reside in my heart and I reside in their heart. Right? Govinda kahe Vaishnava mora pran. Right? The Vaishnavas means the devotees of the Lord. They are like the heart and soul for the Krishna. And the abode of Krishna. By the way, what is the abode of Krishna? What is the name of the abode of Krishna? Prabhuji, can I tell? Yes. Goloka. गोलोक वृंदावन धाम की जय। अभी इसके ऊपर में एक श्लोका है, कोई बता सकते हैं वो क्या श्लोका है? गोलोक में भगवान क्या करते हैं? ये बताइए तो जाने। श्रीमयी माता जी, श्री कृति माता जी, पार्थ, कोई भी बच्चे मुझे बताइए। ये बताइए। सानवी आप बताइएगा, बताइए। बताएंगे? चलिए मैं ही बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ एक श्लोक के साथ में। आ जाइए। ब्रह्म संहिता का 5th चैप्टर है, टेक्स्ट नंबर 43 है। ठीक है। हाँ, ये सब श्लोक ना याद रखने वाले श्लोक हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि जहाँ पे भी श्लोक होता है जिसके जीवन में, उसके जीवन में शोक नहीं होता। ये बात मुझे क्या बार बार बताने की आवश्यकता है? नहीं है प्रभु जी। हाँ, क्या आप एक बार बता दो बस, हम बच्चे उसके बाद में सब याद कर लेते हैं। तो देखिए, ये ब्रह्म संहिता खोला, ये 5th चैप्टर में गए और उसके टेक्स्ट नंबर 43 में आ गए। देखिए, गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निछाय विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। That the Krishna resides in his holy abode. What is that abode? That abode is Goloka. Sanvi, read the translation of this verse. Lowest of all located Devi Dham, a mundane world. Next above is the Mahisha Dham, abode of Mahisha. Above the Mahisha Dham is placed Hari Dham, abode of Hari, and above them all is located Krishna's own realm, named Goloka. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms. तो ये भगवान का धाम गोलोक है, राइट। और गोलोक में भगवान भला करते क्या हैं? क्या भगवान किसी स्कूल को जाते हैं, राइट? या भगवान वहां पे जो है सो कोई फैक्ट्री चलाते हैं? 9 to 5 की किसी शिफ्ट पे भगवान जाते हों? भगवान क्या करते हैं वहां? देखिए, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्र Sevdyamanam means in the abode of Goloka, Krishna is being served by millions and millions of Lakshmi, who is the goddess of fortune. And what? Krishna, he used to take care of the cows. Which cows? Surabhi. How many? Millions and millions of Surabhi cows. And what? The Goloka is surrounded with the Chintamani. Chintamani means the desire fulfilling trees. My God, whatever you will desire under that tree, that desire will be fulfilled immediately. That is the benefit of the Chintamani. Imagine you are under the Chintamani and what you will desire. Vihan Prabhu, you are under the Chintamani tree. So what you will desire?
from the Chintamani. Okay, I will help you. That I need a haircut. That you will desire under the Chintamani? No, Prabhuji, right? If you will desire like that, then definitely you will land it in a barber shop. Then, Prabhuji, I will desire for good marks in the exam. You can get it. That is called Chintamani, right? So, Krishna in his holy abode, he resides there and he never do partiality with anyone. He is always equal for all. But those who are devotees of Krishna, Krishna loves them like anything because devotees loves Krishna like anything. So in order to reciprocate the sweet loving exchanges between Krishna and between the devotees of Krishna, Krishna used to do like that. And for this, Krishna can go up to any extent. You know why Krishna steal butter in his childhood pastime? Is he really a beggar who have never seen butter? Are Baba, in the home of Krishna, in the palace of Nanda Baba, there are 9 lakh cows. What to speak of milk? What to speak of butter? What to speak of yogurt, ghee, and all those things? 9 lakh Surbi cows are there. 9 lakh Surbi cows. And you know about the specialty of the Surbi cows? Any quantity of milk, any liter, whether you want 1 lakh liter or 1 crore liter, at any time, you can get it from one mother cow. That is Surbi. And like that, 9 lakh Surbi cows are there in the courtyard of Nanda Baba. And that Krishna is feeding butter from the home of everyone. And people, they are catching Krishna and they are tying him with the knots and they're saying that, hey, naughty Krishna, you are such a butter thief, right? Makhan chor. Why? Why Krishna do this? बताइए कृष्ण क्यों करते हैं? कृष्ण को खाने का कमी है? Hare Krishna is the one who is fulfilling everyone's desire because the gopis made it with love. Yes, Sanu, thank you so much. Oh my God, what to speak of the gopis, right? Gopis, they are the greatest devotees of Krishna. Greatest devotees of Krishna. There can no one in comparison to the gopis, right? The gopis, they serve Krishna. Their whole life and soul is to please Krishna. The moment when gopis go to Vrindavan, right, or the other parts like Barsana and all the places in order to sell the butter, right, by taking the butter pot on their head, right, they go and they used to sell butter. So at that time, just imagine that he is the pot of the butter on the head of the gopi like this, and gopis, they are going from street to street, door to door in order to sell the butter. So they used to sing song, right? He Krishna, He Yadav, He Sakheti, Govinda Damo, Dharma Dhaveti. He Krishna, you also can sing, right? He Krishna, He Yadav, He Sakheti, Govinda Damo, Dharma Dhaveti. While holding the butter pot on their head, Gopi used to sing these songs. And you know, when someone asks from Gopis, hey Gopi, what is there in your pot? What you are selling? Then the Gopi, they used to reply, actually, I am selling fresh Krishna. Instead of saying fresh butter, they used to say, I am selling fresh Krishna. And they say, ताजे ताजे कृष्ण ले लो, ताजे ताजे कृष्ण ले लो, right? Huh? ताजे ताजे कृष्ण ले लो. Imagine, this is the situation of gopis, right? That they always thinks, that they always meditate about Krishna. They are always absorbed in the meditation of Krishna. That's why gopis, they are the topmost devotees of Krishna, right? Tava katha mritam tapta jivanam
कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदांतकम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो समझ में आया इस प्रेयर का मतलब? दिस श्लोका इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. In this shloka, 10th canto, 31st chapter, text number 9, gopis are saying that the nectar of your word, O Krishna, the nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of whom? Of those who are suffering in this material world, like we all. And these narrations translated by the great sages, the great personalities, the learned sages, eradicates one's sinful reactions. And what? And it bestow good fortune unto them. And what? It invoke all auspiciousness in their life. And these narrations are broadcasted all over the world, not only in India, right? All over the world, entire globe. And they are filled with the spiritual power. Certainly, those who spread the message of Godhead, O Krishna, those who spread your message, they are the most munificent. गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, आपकी कथाएं, आपका शब्द, आपकी लीला, आपका गुण, राइट, ये सभी ना अमृत के जैसे। अमृत जानते हैं? अमृत, अमृत पीने के बाद मरते नहीं है ना? इसलिए देवताओं का एक नाम क्या है? अमरा। कहते हैं भगवान, आपकी लीलाएं, आपकी कथाएं, आपका नाम, आपका रूम, नॉट रूम, आपका रूप, फॉर्म, राइट, आपका गुण, ये सब अमृत के जैसा है। इसको सुनना अमृत के जैसा, कान के लिए अमृत। आपकी लीलाओं को पढ़ना, जब बोल बोल के पढ़ते हैं तो जीवा के लिए अमृत, और जब प्रसाद जीभ पे रख के पाते हैं तो अमृत है ही, राइट, है ना? और जब आपके सुंदर रूप को देखते हैं तो आंखों के लिए अमृत। जब पैर से चल करके आपके मंदिर को जाते हैं तो कृष्णा पैर के लिए अमृत। जब हाथ से हम आपके लिए सेवा करते हैं, जैसे अभी चंदन यात्रा शुरू होगी, भक्त लोग जो है चंदन की सेवा करेंगे, ठाकुर जी के लिए रोज लोग माला बनाते हैं, राइट, तो वो हाथों के लिए अमृत है। ऐसी सेवा जब हमें मिलती है, कहते हैं कृष्णा, खास करके ऐसे लोग जो कि आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, कैसे घूम घूम के, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, राइट, ये सबसे बड़े दाता। ठीक है, तो इसीलिए कृष्णा जो किसी से द्वेष नहीं करते, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कृष्णा एज confirmed by Krishna in Bhagavad Gita 15:7. I have already discussed this sloka n number of times. ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति च, right? So because we are part and parcel of Krishna, right, and if Krishna is Satchidananda, if Krishna is Atma Ram, who is always happy, right, so we being the part and parcel of the Krishna, क्या हम लोग खुश नहीं रह सकते? आराम से रह सकते, है ना? क्योंकि खुशी हमारा स्वाभाविक अधिकार है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कोई भी बच्चा है जो कि दुखी होना चाहता हो? जाओ जी, आज हम दुखी होना चाहते हैं, हमको छोड़ दो, मैं दुखी होना चाहती हूँ। क्या कोई कभी ऐसा चाहता है कि मैं दुखी होऊंगा, मैं दुखी होऊंगी? इज एनीवन वांट्स टू बिकम in a miserable condition, want to become sorrow? No, everyone wants to experience the bliss, everyone to experience the happiness. Why? Have you ever think why you want to experience happiness? क्यों happiness हम लोग experience करना चाहते हैं? Because we are the part of same Krishna who is always joyful, who is always blissful, who always full with ecstasy. That's why we also want to become blissful. We also want to become happy, है ना? हाँ प्रभु जी, ठीक है। So God has given enough in the world for everyone's need, but not even enough for a single man to live. Imagine, let's think about it.
योर फ्रेंड कम्स टू योर होम, ठीक है, आप सभी सभी अपने अपने केस में सोचिए कि आपका दोस्त आपके घर पे आया एंड ही ब्रिंग्स और सी ब्रिंग्स आइसक्रीम फॉर यू, माय गॉड, राइट, आइसक्रीम सुन के मुंह में पानी आ गया, राइट। सो योर यंगर सिस्टर, सी ऑल्सो लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है, बट अभी आपका दोस्त सिर्फ आपके लिए आइसक्रीम लेके आया, श्रीमई की कोई फ्रेंड आई, श्रीकृति के लिए नहीं लेके आई, अभी श्रीकृति को भी आइसक्रीम चाहिए, राइट। हाँ, तो व्हाट विल यू डू? हाँ, करना क्या है, दीदी के हाथ का छीन कर खा लेंगे, राइट। व्हाट विल यू डू? बताइए सानवी, आप क्या करेंगे? आपके लिए कोई लेके आया, संभी भी चाह रही है, तो क्या करेंगे? आधा दे दूंगी, आधा ले लूंगी। आधा दे दूंगी प्रभु जी, ज्यादा ज्यादा आधा आधा शेयर कर लूंगी, बोलेंगे ले रख, आधा तू खा आधा मैं खाऊंगी, राइट, यही करेंगे ना? हम्म, ये तो नहीं करेंगे, हाँ दीदी का ना बड़ा फ्रेंड है, हाँ दीदी के लाता है, मेरे लिए कोई नहीं लाता, हाँ मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना, राइट, मिल बांट के खाना, ठीक है ना। हाँ, आद्या सोच रही है प्रभु जी मैं किसके साथ में करूंगी, हाँ मैं ऐसा करूंगी कि मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में झगड़ा करूंगी, ए राइट हैंड एक बार मैं लिख करूंगी, ए लेफ्ट हैंड एक बार मैं लिख करूंगी, राइट। सो मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर सफरिंग because their mind and heart are filled with greed, envy, pride, anger, etc. अरे जो हृदय भगवान का निवास स्थल है, जिस हृदय में भगवान होने चाहिए, वहां पे हम किसको बैठा के रखे हैं? काम, क्रोध, मोह, मत्सर, है ना रंजित सोम प्रभु, क्या बोलते हैं आप? बड़े दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ के बाद तो आप ही हैं प्रभु जी, राइट। सो वांटिंग मोर एंड मोर, वांटिंग मोर एंड मोर causes our hearts to be filled with burning greed. अच्छा, एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, नॉट अ रियल थिंग, राइट। मैं किसी को सजेस्ट, ये रियल बात नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर में पहले दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को मारना है, ठीक है, और मैं सोचा कि कैसे मारूं कैसे मारूं, तो मैंने सोचा कि एक कोयला जल रहा है, देयर इज अ बर्निंग कोल, एंड आई विल थ्रो दैट बर्निंग कोल ऑन दैट पर्सन। So with this intention, I just lift or pick that burning coal in my hand in order to make harm the person who is my enemy. What do you think? Who will be the first person who will get hurt by that burning coal? Prabhuji, can I answer? Prabhuji, who touched the hot coal? For the person who is throwing, like me, because I picked up the burning coal, so my hand already got hurt from it. हाँ, जो उस बर्निंग कोल को पहले अपने हाथ में लेगा उसका ही हाथ जलेगा, है ना। माँ बाप रे, हाँ बर्नोल लाओ, राइट, बर्निंग कोल, आई, यस, बिकॉज आई एम होल्डिंग दिस। सो एनवी, एंगर, greed, this is like that burning coal, right? So greed will never let us be satisfied, greed will never make us satisfied. By sharing our things with others, we show our love for them, this makes us happy, right? Because probably you may have heard that share is the real care, share is the real care, right? That's why we should share things with others, those who are in need. So there are many children who are greedy and they want to have more and more and more. Some are greedy for cakes, some are greedy for toys, some are greedy for crayons, some are greedy for pencils, some are greedy for some clothes and all those things, right? So our enemy greed, it exists within us and it is the cause of dissatisfaction and anxiety in our life. Today I'm sharing a mantra that how you can remain satisfied in your life. अच्छा, आप सभी लोग खाना खाते हैं ना? हाँ प्रभु जी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि खाना नहीं खाता? वी ऑल ईट एटलीस्ट 3 times a day. I request you to please follow this.
slowly you will feel satisfied. What we are supposed to do, प्रभु जी? Just for example, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि बिहान जो है वो 4 रोटी खाते हैं, ठीक है बिहान, आप 4 रोटी खाते हैं, बट बिहान खाना कैसे स्टार्ट करते हैं कि एक बार प्लेट में 1 रोटी लेते हैं, फिर उस 1 रोटी को थोड़ा सा तोड़ते हैं, फिर उस रोटी को देखते हैं, रोटी उनको देखता है, फिर प्लेट उनको देखता है, वो प्लेट को देखते हैं, फिर वो टीवी को देखते हैं, टीवी उनको देखता है, फिर मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल उनको देखता है, फिर वो रोटी को खाते हैं। फिर उसके बाद मम्मी बोलती है बिहान और लेगा, बोलते हैं हाँ मम्मी लाओ, फिर 1 रोटी आता है, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होता है, टीवी उनको देखता है, टीवी वो टीवी को देखते हैं, मोबाइल उनको देखता है, वो मोबाइल को देखते हैं, रोटी उनको देखता है, रोटी को वो देखते हैं, राइट, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अगर किसी दिन पनीर का पराठा बन गया, राइट, ओ तब तो पूछो ही मत, मजे ही मजे हैं, राइट। उस दिन 4 कौन पूछता है, 5 खा जाए, 6 खा जाए, है ना। जानते हैं इससे क्या होता है? इससे क्या होता है प्रभु जी? पेट भरता है, और क्या होता है? पेट तो भरता है, साथ में आपका डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए मालूम है? आपका जितना खाना में पेट भरता है उतना एक ही बार में ले लो। 4 रोटी अगर खाते हो, एक ही बार में 4 रोटी प्लेट में ले लो। अगर एक बाउल राइस लेते हो, एक ही बार में एक बाउल राइस ले लो। ऐसा नहीं कि एक बार 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच, मम्मी 1 घंटे से खड़ी है, बेटा 1 चम्मच दूं, अभी रुको खाने दो, 1 चम्मच दूं, अभी रुको खाने दो। एक बार में जब आप ले लेंगे ना अपने प्लेट में, तो आप धीरे धीरे आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है, आप क्या देखेंगे, वो खत्म होना चालू हो जाएगा, राइट। आप इसको फॉलो कीजिएगा, जितने बच्चे हैं, राइट, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप चेंजेस को अपने आप में फील कर पाएंगे। Right now I'm working on it, that's why I'm sharing with all of you, right? And yes, it's helping also me. So there are many children, right, those who are practicing these simple steps. These things are helping them in order to become satisfied in their life, right? So greed is such an enemy of us. It says that look at me, I am greed, Mr. Greed. I reside in your body and cause tension and anxiety and dissatisfaction, right? Huh. So if we learn to lead a life which is full of satisfaction, with the gifts that God has given us, then we'll always become happy, right? So हम लोग को एक फॉर्मूला सीखना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है मालूम है? ABCD फॉर्मूला है। A for apple, B for boy, C for cat, E for dog, right? क्या ये ABCD फॉर्मूला है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या है? डेफिनेटली बी A for अर्जुन, B for Balaram, C for चैतन्य महाप्रभु, D for ध्रुवा। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो फिर क्या है प्रभु जी? A for association of God people or association of good people. Association of good people. अच्छा, then B for associate with books. Which kind of book? Harry Potter series, right? Or Spider-Man series, or this or that, or He-Man, She-Man, this man, that man, right? Ullu man, Chamkadar man. No, 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 no. Associate with holy books. Books like Ramayana, books like Bhagavatam, books like Gita, books like Chaitanya Charitamrita, books like all those holy scriptures. And good, positive, those books which help you to remain positive mindset, right? So those books. Then C for chanting the holy names of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And D for diet. प्रभु जी डाइटिंग करना है क्या? हाँ प्लीज प्रभु जी डाइटिंग को मत बोलो, राइट। Diet means only take those things which comes in the mode of goodness and which is offered to Lord Prasad, right? So diet means pure, clean, sanctified food which you have offered to Krishna. ठीक है? हाँ प्रभु जी ठीक है, चलेगा। तो अभी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा क्लास करेंगे, अभी लंबा चलेगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट, आज हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। तो once a monkey who was feeling very hungry, ठीक है, found an army camp. Yes sir, right? Militaries. So
Finally, the monkey who was sitting on a branch of a tree, he was observing those army camps with missiles and top and all those guns and every ammunitions and all those things, right? So monkey was thinking, finally, at last, my desire for food will be fulfilled, because there was a pantry car also, right? Where those people, those army people, they were cooking for the battalion. So some army soldiers, those who were in the kitchen, those who were cooking, they were telling that let's cook for the horses. He was thinking how lucky I am, right? Because they are cooking for the horses. Next, it would be me, right? The monkey. So the another soldier, another army, he was telling, let's go. We'll feed the horses after some time. So the monkey was thinking, my God, this is my chance, right? Definitely I will have my meal because they have cooked this food for the horses. So I will eat this. So seeing no one around, there, right? Seeing no one around, the monkey jumped from the tree, right? Down, and he started eating. So delicious, yum, 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 right? The monkey satisfied his hunger, but not his greed. He continued to stuff his mouth with the food. Even he was like, right, completely, but still he was stuffing and stuffing. He grabbed some more food stuff using both his hand so that he would have food for the next few days. Feeling very happy, he quickly jumped onto the tree. And the monkey was thinking, yes, I have enough for few days. But one again, what happened? Once one grain, that food stuff, one part of that food stuff, it slipped from the hand of monkey and it fell to the ground. Monkey was thinking, I cannot lose it, right? I must get it back. So without thinking, the monkey, he threw away all the grains in his hand and he jumped from the tree. अभी देखो क्या हुआ, एक खाना का दाना बचाने के लिए वो बंदर क्या किया, अपना पूरा हाथ खोल करके कूदा वहां से। जैसे हाथ खोल के कूदा, राइट, उसके हाथ से सब गिर गया। गिरा कि नहीं गिरा? अभी वो जो पेड़ था ना, उस पेड़ के नीचे, वो पेड़ जो था, दैट ट्री वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. So those food stuff, it all fall down into that flowing river. And the monkey, he was looking, must be there, it must be there, right? यहाँ पे होगा, अरे कहाँ पे, अरे अभी तो यहाँ पे गिरा, right? कहाँ पे है? So for a single grain, he searched everywhere. Where is my grain? Where is my grain? Where is my grain? I cannot find it anywhere. Then he remembered, oh my God, for a single grain, I have lost the rest of my food. Right? उसकी जब बुद्धि ठिकाने पे आई, उसको क्या समझ में आया कि मैंने एक ग्रेन के लिए मैंने अपने सारे ग्रेन्स को लॉस्ट कर दिया। और तभी जब वो ऐसा कर रहा था, पीछे से आर्मी के लोग आते हैं और उन्होंने उस बंदर को चोरी करते हुए देख के खाते हुए देख लिया था। वो आते हैं, उस मंकी को पकड़ लेते हैं, राइट, और उसको पकड़ के उसको केज में डाल देते हैं। ठीक है, अब वो बंदर बेचारा केज में आ गया, राइट, और बंदर जो पेड़ की डाल पे कूदता था, अभी वो पिंजड़े में बंद हो गया, राइट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट sometimes we act like the monkey, right? Yes, Prabhuji, we are monkey only, right? Our mind is like monkey, right? So in our greed for one thing, we lose all that thing what we have. So do not be greedy, be satisfied with whatever God has given unto you. आपको भगवान ने जो भी दिया है उससे संतुष्ट रहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे
तो फिर आप सुखी नहीं रह सकते, राइट? सो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन satisfaction. So one who is not satisfied, he cannot become happy. ठीक है? जो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, जो संतुष्ट नहीं हो सकता, वो कभी खुश नहीं हो सकता। तो खुश अगर होना है जीवन में, तो पहले संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है? और अपने कार्य को, जो आपका निर्दिष्ट कार्य है, मतलब वॉट एवर इज योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, you you are supposed to do your prescribed duty, because there is a very wonderful shloka from Hitopadesh which teaches us. I will chant this shloka first. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. Means what? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. कि by via doing one's prescribed set of action, one can achieve success in life. But if someone who is only a daydreamer, right, one who does not do anything, he just simply is a daydreamer, he cannot achieve anything in life. So in order to become successful in life, we need to do our best. ठीक है? तो अभी हम लोग एक और शॉर्ट मॉरल स्टोरी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे. दिस स्टोरी इज अबाउट अ फ्लाइंग टर्टल. My God, flying turtle! We haven't ever think about a turtle who can fly, right? Yes, hardly we know that a turtle who can hardly walk, Prabhuji, right? But a turtle, how a turtle can fly, right? So there was a discussion going on. Are you sure this is going to work? One of the friend swans asked Kambu Kriba. Who is this Kambu Kriba? He is the hero of our story. He is the Mr. Turtle in our story, right? So the name of this turtle is Kambu Kriba. So who asked? The swan. Who is the swan? The friend of this turtle. What he asked? Are you sure this is going to happen? The turtle smiled and nodded his head. Right, yes, right. With enthusiastically, the second friendly swan said, I'm not so sure with a talkative turtle like you, right? Because I cannot rely. So the Skambugriva, the hero of our story, this turtle, he shook his head in disagreement. No, right? I'm a firm believer. I know that this will happen. I am wise enough to know when to open my mouth and when not. Besides this was his own idea, so naturally he would comply. The three friends had been discussing a solution to a great problem they were in, right? What was that problem? The lake in which they had grown up, right from the day they were born, was drying up, right? Just like now, summer seasons are arriving, right? From tomorrow, there will be 1st April, right? So definitely because of the excess heat, right? So the water will evaporate, right? And the lakes and the water bodies, it will start drying. So this lake was also started drying. So they were discussing all those friends like this turtle, Kambukriva, and the two other swan friends regarding the lake. So there had any bountiful rainfall in the years. So if this trend continue, in a few months, there wouldn't be a single drop of water left in this lake. The turtle had suggested that the swans fly around and look for an alternate source of water where we can migrate from this place. This suggestion had led them to the discovery of a huge lake
with plenty of water at a distance from where they were. जहां पे वो लोग थे ना, वहां से बहुत दूर पे उनको एक लेक मिला, ठीक है, जहां पे बहुत सारा जल था. Swans could easily fly, right? But the question was how the turtle would ever reach there. अरे वो स्वान तो उड़ के जा सकता था, लेकिन कछुआ कैसे पहुंचेगा? प्रभु जी फ्लाइट ले लेगा, हाँ, ट्रेन में बैठ जाएगा, बस में बैठ जाएगा, रैपिडो पे बैठ जाएगा, कार में बैठ जाएगा, हाँ, कछुआ कैसे पहुंचेगा? दिस इज द चैलेंज, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो that's when the turtle had an idea. He asked them to find a tough stick. जी मारना है क्या किसी को? सुनिए. His idea was to have both the swans hold the ends of the stick in their mouth. एक इंड, एक ऐसा स्वान पकड़ेगा, एक इंड दूसरा स्वान अपने मुंह में रहेगा, ठीक है, and he would hang on to the middle of the stick with his limbs. समझ में आ रहा है? दोनों हंस क्या करेगा, अपने अपने मुख में ऐसे डंडे को डाल देगा और कछुआ बीच में पकड़ के झूल जाएगा, ठीक है, और तीनों दोस्त उड़ करके उस जगह पे पहुंच जाएंगे. Unsure of the plan, but sensing the confidence of the turtle, the swans agreed. ठीक है, स्वान जो थे वो बोले कि ठीक है चलो. As per their plan, the swans carried the turtle hanging onto the stick, right? When they reached the mid-air, the turtle experienced a joy unlike he wanted to tell his friend. There was so much he wanted to tell his friend, right, about his feeling right then, but he realized that he had to keep his mouth shut. है ना? क्योंकि अगर कछुआ मुंह खोल के बोलेगा तो हो सकता है कि मुंह से भी वो पकड़ा हो तो गिर जाए, इसलिए कछुआ को चुपचाप रहना. As they flew over a village, some villagers happened to see this unique sight of two swans, right, carrying a turtle on a stick. They began to gather in hundreds and loudly expressed their surprise, right? Look, here is some strange thing, right? Two swans are flying, and there is a stick in between their mouth, and there is a turtle hanging with the stick, right? And wonderment, the unique friendship between the animals, the turtle become curious on hearing all the commotions below, which was happening there in between all those villagers, especially when he saw that everyone was pointing in his direction and talking animatedly. He was dying to know what they were saying, right? हाँ, उसको ये क्यूरियोसिटी हो गया कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में. लोग ऐसे कर रहे थे, राइट? तो कछुए को लगा भाई मेरे बारे में कुछ जरूर बात हो रही होगी. सो द विंड वाज ब्लोइंग सो हार्ड इन हिज ईयर्स दैट ही कुड हार्डली हियर एनीथिंग. साय साय, अभी ऊपर में उड़ रहा है ना कछुआ, राइट? तो कछुए को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा. He decided to check in his friend could hear anything at all. क्या उसके दोस्त कुछ सुन पा रहे हैं? What is all this? जैसे ही कंबुग्रीवा ने बोला कि what is all this, ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हुआ उसके बाद में, कोई बता सकता है? Prabhuji, he fell down as the stick was. हाँ, वो गिर गया, राइट? वो गिर गया क्यों? क्योंकि वो उस स्टिक पे लटका हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो उस स्टिक पे लटका हुआ था इसलिए सीधे वहां से नीचे गिरा. As soon as he opened his mouth, and the swans helplessly watched their friend fall right in the midst of the villager, who rushed in hordes to capture the turtle. What lesson we can derive from this flying turtle story? Can anyone? What moral is there? पार्थ मजुमदार प्रभु, रंजीत सोम प्रभु, शाश्वत प्रभु, अभिनव लाल प्रभु, कोई तो बताइए. ध्यान से सुनिए. ओवर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड नेग्लेक्ट ऑफ एडवाइस फॉर द डाउनफॉल. Sanvi is replying, curiosity can kill the cat. Yes, Sanvi, you are true. You are also true. But
overconfidence. This turtle was so overconfident in his plan, right? That overconfidence in yourself and neglect of advice of others, right, cause a downfall. So this was the lesson of this story of flying turtle. Right? Hope all of you get a great lesson from today's class, right? That love gives and greed takes, right? So humble advice, do not become greedy in your life. Okay. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So thank you all of